Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. We welcome all of you for today's session. We'll continue reading from Canto 1, 5th chapter. And we have Meenakshi Radha. She will do the reading for today. Meenakshi Radha, can you start? Should I share the screen? Yes, you can share, and we'll do the Mangalacharan. Okay. Quiz results? I am not able to see the quiz results, Prabhuji. That's what I was telling you. I am not able to see them. Let me share the quiz Sure. results. Okay. Okay, so these are the results. So there's 6 participants only. Let me see what is the 4 and the first one. First one is Atul Prabhu, again with 4950 points. And then second one is Prabhupada Kripa Sangha. Maybe somebody from our side. That is me. 4810. Who did Yeah, it? I thought so. And then Ankur Sharma Prabhu with 4780 points. Anshi Mataji with the 4th position, 4690 points. And then Meenakshi Mataji with 4630 points in 5th position. Let me refresh and see if there are any candidate updates. No, this is the same. So I think Meenakshi Mataji can start. Thank you for attending the quiz. Hare Krishna. So we start with the prayers, Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayan Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Yuttam Shloke Bhaktir Bhavati Neshtaki Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Nam Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauri Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mantra Srimad Bhagavatam ki jai. I'm not able to share my screen. Rameshwar Prabhu has to make it go first. Yes. Rameshwar Prabhu, you have to make me a co-host. Yeah. You have the permission now. Yes. Ankur Prabhu, you can start. Thank you so much for raising my hand. Hare Krishna.
जी माता। त्वम आत्मानामात्मन वेमोद्घदृक परस्य पुंस परमात्मन कलाम अजम प्रजातम जगत शिवाय तन्महानुभावा अभ्युदयो अधिगण्यताम। Synonyms: Tvam, yourself; Atmana, by your own self; Atmanam, the super soul; Avehi, search out; Amog Drik, one who has perfect vision; Parasya, of the transcendence; Pumshah, the personality of Godhead; Paramatmana, of the Supreme Lord; Kalam, planetary part; Ajam, birthless; Prajatam, have taken birth; Jagatah, of the world; Shivaya, for the well-being; Tat, that; Maha Anubhava, Bhava, of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna; Abhyudaya, pastimes; Adhiganyatam, describe most vividly. Translation: Your goodness has perfect vision. You yourself can know the super soul personality of Godhead because you are present as the plenary portion of the Lord. Although you are birthless, you have appeared on this earth for the well being of all people. Please, therefore, describe the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, more vividly. Purport: Srila Vyasdev is the empowered plenary portion incarnation of the personality of Godhead Sri Krishna. He descended by his causeless mercy to deliver the fallen souls in the material world. The fallen and forgotten souls are detached from the transcendental loving service of the Lord. The living entities are parts and parcels of the Lord, and they are eternally servitors of the Lord. All the Vedic literatures, therefore, are put into systematic order for the benefit of the fallen souls. And it is the duty of the fallen souls to take advantage of such literatures and be freed from the bondage of material existence. Although formally Srila Narada Rishi is his spiritual master, Srila Vyasadeva is not at all dependent on a spiritual master because, in essence, he is the spiritual master of everyone else. But because he is doing the work of an acharya, he has taught us by his own conduct that one must have a spiritual master, even though he be God himself. Lord Sri Krishna, Lord Sri Ram, and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, all incarnations of Godhead, accepted formal spiritual masters, although by their transcendental nature they were cognizant of all knowledge. In order to direct people in general to the lotus feet of Lord Sri Krishna, he himself, in the incarnation of Vyasadeva, is delineating the transcendental pastimes of the Lord. हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो इसमें जो है नारद मुनि बता रहे हैं कि व्यासदेव को बता रहे हैं कि ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि यू आर अ पार्शियल, जो है आप क्या है, शक्तावेश अवतार हैं भगवान के, तो आपको तो सब कुछ पता है ना। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब व्यासदेव जी जो हैं वो खुद ही भगवान के इनकारनेशन है, तो वो क्यों वेट कर रहे हैं कि वो नारद मुनि उनको इंस्ट्रक्शन दे। तो यहाँ पर प्रभुपाद उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो है वो शो कर बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हर एक जो लिविंग एंटिटी है उसके लिए स्पिरिचुअल मास्टर कितने इंपॉर्टेंट है ना। और हम ये देख सकते हैं बाकी से प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया इसके अंदर कि श्री कृष्ण भी हैं, उन्होंने भी जो है गुरु एक्सेप्ट किए, लॉर्ड राम ने भी किए, फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी स्पिरिचुअल मास्टर करे। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, है ना, श्रेष्ठ लोगों का जो आचरण है वो बाकी सब लोग भी फॉलो करते हैं। तो इसीलिए भगवान फिर उसके में बताते हैं कि जब मैं भी आता हूँ तो मैं भी एक जो पूरा इस मटेरियल वर्ल्ड का पूरा सिस्टम उसको फॉलो करती हूँ।
और सिस्टम में क्या है कि हमें स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और जो फॉलन सोल है बिना स्पिरिचुअल मास्टर के एक्सेप्ट किए आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है किसी गुरु की, हम तो डायरेक्टली कृष्णा से कनेक्टेड है। बट कृष्णा खुद ही अपने एग्जाम्पल से, और इवन कृष्णा के जितने भी इंकारनेशन है वो अपने एग्जाम्पल से यहाँ पर शो कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर की आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। आपकी पोजीशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, कैसी भी हो, आप कितने भी एम्पावर्ड हो, बट जो है आपको आपके स्पिरिचुअल इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या वैसे भी आपको एक स्पिरिचुअल मास्टर की बहुत जरूरत है। यहाँ पर गोपाल वही एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर, द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिकली अ spiritual master. Joyful, can you read next? Just move on to the next. Mataji. Can you scroll down? Yeah. Idam hi pumshas tapasas sutayasva kristasya shuktasya cha buddhi dattayoh avichuto artha kabibhir nirupito yaduttama shloke gunanuvarnanam. Idam, this, he, certainly, pumsha, of everyone, tapasa, by dint of austerities, shrutasya, by dint of study of the Vedas, va, or shristasya, sacrifice, shuktasya, spiritual education, cha, and buddhi, culture of knowledge, dattayo, charity, avichyuta, infallible, artha, interest, kavi, kavi by the recognized learned person, nirupita, concluded, yat, what, Uttam Shlok, the Lord who is described by choice poetry, Guna Anuvarnanam, description of the transcendental qualities of. Translation and purport by Prabhupada, Sri Prabhupada. Learned circles have positively concluded that the infallible purpose of the advancement of knowledge, namely austerity, studies of the Vedas, sacrifice, chanting of the hymns, and charity, culminates in the transcendental description of the Lord, who is defined in choice poetry. Human intellect is developed for advancement of learning in art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, economics, politics, etc. By the culture of such knowledge, the human society can attain perfection of life. This perfection of life culminates in the realization of the Supreme Being, Vishnu. The Shruti therefore directs that those who are actually advanced in learning should aspire for the service of Lord Vishnu. Unfortunately, people who are enamored by the external beauty of Vishnu Maya do not understand that culmination of perfection or self-realization depends on Vishnu. Vishnu Maya means sense enjoyment, which is transient and miserable. Those who are entrapped by Vishnu Maya utilize advancement of knowledge for sense enjoyment. Sri Narad Muni has explained that all paraphernalia of the cosmic universe is but an emanation from the Lord out of his different energies, because the Lord has set in motion by his inconceivable energy the actions and reactions of the created manifestation. They have come to be out of his energy, they rest on his energy, and after annihilation, they merge into him. Nothing is therefore different from him, but at the same time, the Lord is always different from them. When advancement of knowledge is applied in the service of the Lord, the whole process becomes absolute. The personality of Godhead and his transcendental name, fame, glory, etc., are all non-different from him. Therefore, all the sages and devotees of the Lord have recommended that the subject matter of art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, and all other branches of knowledge should be wholly and solely applied in the service of the Lord. Art, literature, poetry, painting, etc., may be used in glorifying the Lord. The fiction writers, poets, and celebrated literatures
are generally engaged in writing of sensuous subjects, but if they turn toward the service of the Lord, they can describe the transcendental pastimes of the Lord. Valmiki was a great poet, and similarly, Vyasdev is a great writer, and both of them have absolutely engaged themselves in delineating the transcendental activities of the Lord by doing by doing so have become immortal. Similarly, science and philosophy should also be applied in the service of the Lord. There is no use presenting dry speculative theories for sense gratification. Philosophy and science should be engaged in to establish the glory of the Lord. Advanced people are eager to understand the absolute truth through the medium of science, and therefore a great scientist should endeavor to prove the existence of the Lord on a scientific basis. Similarly, philosophical speculations should be utilized to establish the supreme truth as sentient and all powerful. Similarly, all other branches of knowledge should always be engaged in the service of the Lord. In the Bhagavad Gita also the same is affirmed. All knowledge not engaged in the service of the Lord is but nuisance. Real utilization of advanced knowledge is to establish the glories of the Lord, and that is the real import. Scientific knowledge engaged in the service of the Lord and all similar activities are all factually Hari Kirtan or glorification of the Lord. Chalo. Hare Krishna. Thank you so much for it. So we can see that यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस है ना, उसके बेसिस पे हम एक लर्निंग प्रोसेस करते हैं, और लर्निंग प्रोसेस में हम डिफरेंट डिफरेंट जो है चीजों को लर्न करते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि बट हम क्या करते हैं, उनको लर्न करने के बाद अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाते हैं। वो दैट प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग दैट्स बिकॉज वी आर अंडर द विष्णु माया, है ना, और उसको हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के में लगाते हैं, सॉरी। बट प्रभुपाद ने एक्सप्लेन कि अगर हम उसकी जगह जो है ना, उन्हीं सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाएं, और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो सर्चिंग द लाइन, हाँ यस, द आर्ट लिटरेचर पोएट्री पेंटिंग एक्सेट्रा मे बी यूज इन ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, है ना। सो हम देख सकते हैं प्रभुपाद ने अपने ही एग्जाम्पल से जो लिखा है, जैसे जो आचार्य हैं, जो भागवत है ना, वो अपने आचरण से सिखाते हैं ना। इससे प्रभुपाद ने यहाँ पर अगर लिखा है तो प्रभुपाद ने अपनी लाइफ से शो भी किया है। तो प्रभुपाद ने जो है इंट्रोड्यूस किया कि जो भी बुक्स है प्रभुपाद की, उसमें कुछ पेंटिंग्स जाएंगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट श्लोक्स को एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को, जो जो भी स्क्रिप्चर है उसको एक्सप्लेन करेंगी। तो वहां पर जो है डिवोटीज को पेंटिंग में एंगेज किया, प्रभुपाद पर्सनली गाइड किया करते थे। लिटरेचर तो ऑब्वियसली प्रभुपाद ने जो सारे लिटरेचर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि हर कोई उसको पढ़ सके। पोएट्री, कैन सी दैट प्रभुपाद एंड डिफरेंट आचार्यज हैव रिटन सो मेनी ब्यूटीफुल भजन्स, है ना। तो इस तरीके से जो है प्रभुपाद ने खुद भी एंगेज हुए, और जो है अपने एग्जाम्पल से बाकी जो अपने शिष्य हैं उनको भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज किया। तो बता रहे प्रभुपाद की फिलोसफी जो है वो किस लिए किया जाए, कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाए। तो प्रभुपाद ने क्या किया था, जो उनके शिष्य थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको वो बोलते थे कि आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाइए, और जो भी स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे जो भी पॉइंट्स है उनके फ्रंट में उनके सामने रखिए और उस पर वाद विवाद करिए, एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश द glorification of the Lord. That is the ultimate purpose of all the Vedas and everything whatever we have. That ultimate purpose is to glorify, which the जो भी नारद मुनि है व्यास देव को वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जो हर किसी जीव को एक पर्पस होना चाहिए, दैट इज टू नो द लॉर्ड बेसिकली। Anybody else wants to read next shloka? Yes, Ankur Prabhu, you can read. निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विक्षता निर्विवक्षता।
synonyms. Aham, I. Pure, pura, formerly. Atit bhave. Am I audible? Hare Krishna. Prabhuji, your audio is a little slow. Very feeble, Prabhu. It's very Oh, feeble. I'm sorry. Is it Yeah, better now now? it's yes. Sorry, Now it's my better. mouthpiece was up. Sorry. Aham, I, pura, formerly. Atit bhave, in the previous millennium. Abhavam became. Mune, O Muni. Dasyah. Can you scroll up a bit? Of the maid servant. Tu, but Kasyaschana, certain. Vedavadinam, of the followers of Vedanta. Nirupita, engaged. Balaka, boy servant. Eva, only. Yoginam, of the devotees. Sh- Shushrushane, in the services of Pravavarshi, during the 4 months of rainy season. Nirvivikshatam, living together. Translation: O Muni, in the last millennium, I was born as the son of a certain maid servant engaged in the service of Brahmanas who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of rainy season, I was engaged in their personal service. Purport: the wonder of an atmosphere surcharged with devotional service to the Lord is briefly described herein by Sri Narad Muni. He was the son of the most insignificant parentage. He was not properly educated. Still, because his complete energy was engaged in the service of the Lord, he became an immortal sage. Such is the powerful action of devotional service. The living entities are the marginal energy of the Lord, and therefore they are meant for being properly utilized in the transcendental loving service of the Lord. When this is not done, one's situation is called Maya. Therefore, the illusion of Maya is at once dissipated as soon as one's full energy is converted in the service of the Lord instead of in sense enjoyment. From the personal example of Sri Narad Muni in his previous birth, it is clear that the service of the Lord begins with the service of the Lord's bona fide servants. The Lord says that the service of his servants is greater than his personal service. Service of the devotee is more valuable than the service of the Lord. One should therefore choose a bona fide servant of the Lord constantly engaged in his service. Accept such a servant as the spiritual master and engage himself in the spiritual master's service. Such a spiritual master is the transparent medium by which to visualize the Lord, who is beyond the conception of the material senses. By service of the bona fide spiritual master, the Lord consent to reveal himself in proportion to the service rendered. Utilization of the human energy in the service of the Lord is the progressive path of salvation. The whole cosmic creation becomes at once identical with the Lord as soon as service in relation with the Lord is rendered under the guidance of a bona fide spiritual master. The, ex- the expert spiritual master knows the art of utilizing everything to glorify the Lord, and therefore, under his guidance, the whole world can be turned into the spiritual abode by the divine grace of the Lord's servant. हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभुजी. सो यहाँ से जो है इस पॉइंट से जो नारद मुनि है अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से बाय द सर्विस ही बिकम अ डिवोटी एंड ही गॉट अ देन वहां से इसके आगे आई डोंट वांट टू रिवील द स्टोरी, सो विल as we continue with the shlokas we get to know about the story of Narad Muni. So इसके अंदर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेसिकली 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर. पहला पॉइंट प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी सारी लिविंग एंटिटीज हैं वो क्या है, मार्जिनल है ना. मार्जिनल मतलब तटस्थ. तटस्थ मतलब
जो तट है वो या तो पानी में रह सकता है या फिर जमीन में रह सकता है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं है बेसिकली। सो यहाँ पर वो उपाध्याय एक्सप्लेन कर रहे हैं, या जो मार्जिनल एनर्जी है या तो वो माया की सर्विस में रह सकती है या फिर वो कृष्णा की सर्विस में रह सकती है। माया की सर्विस में अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो अगर वो भगवान की सेवा में जैसे जैसे लगता जाता है तो दैट दे गेट डिटैच फ्रॉम द देयर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। फिर उसके बाद प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है लॉर्ड की सर्विस कर सकते हैं। हम लॉर्ड की सर्विस कर सकते हैं, बेस्ट वे क्या बताया प्रभुपाद ने, कि हम जब लॉर्ड के बोनाफाइड सर्वेंट की सर्विस करते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया और उनके बहुत सारे पार्षदों ने सिखाया कि किस तरीके से हमें दास अनुदास बनना है, कि भगवान के दास बनेंगे, विल गेट अ मोर मर्सी अबाउट दैट ना। एक बहुत ही मंडेन एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है ना, तो उसको छुड़ाने के लिए कोई आएगा तो उसको भी लगेगा, उसको छुड़ाने को कोई आएगा तो उसको भी लगेगा। जब कहते हैं कि जब पीछे वाला उसको ज्यादा शॉक लगता है ना, तो दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ मर्सी, व्हाट द दास इज गेटिंग, एंड जो उसको सर्व कर रहा है उसको और ज्यादा मर्सी मिलेगा, और उसको जो सर्व कर रहा है उसको और ज्यादा मर्सी मिलेगी। द चेन गोज लाइक दैट। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हमें जो है बोनाफाइड सर्वेंट को एज अ स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडिया। ट्रांसपेरेंट मीडिया में एग्जांपल दिया जाता है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडिया है। हमारे और बीच में स्टार्स के और जो प्लानरी पोर्शंस है, प्लैनेट्स हैं, उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं उसे। तो ऐसा नहीं है कि वो अपना ही कुछ दिखा देता है, वो क्या करता है, जो भी दूर की चीज है एक्चुअली उसे पास लाके दिखाता है। सिमिलरली जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, और जो हमारा कनेक्शन बहुत दूर का हो चुका है, बहुत सारा गैप हो चुका है हमारे और कृष्णा के बीच में, दे बिकम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड दे एम्पलीफाई दैट, है ना। और इसको क्या करते हैं, पास में भी लाते हैं और साथ में एम्पलीफाई भी कर देते हैं। दैट इज अ रोल ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, एंड Prabhupada is saying we should accept the spiritual master and render a service to him. That's what the Prabhupada is claiming in this shloka. So just read a last shloka of this day. Otherwise, Shall, can you read? Yes, Mataji. ते मयि अपेतखिला चापले अर्भके दान्ते अधृता कृदन्नाके अनुवर्तिनि चक्रुकृपं यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रुमान शुश्रूषमाने मुनयो अल्पभासिनी ते they my onto me apet not having undergone akhil all kinds of chapale proclivities arbhake unto a boy dante having controlled the senses adhrita kridan kridanake without being accustomed to sporting habits anuvartini obedient Chakru did bestow Kripam, causeless mercy, Yadyapi, although Tulyadarshana, impartial by nature, Shushrusha Mane, unto the faithful Munaya, the Muni followers of the Vedanta, Alpabhashini, one who does not speak more than required. Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachments for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than required. In the Bhagavad Gita, the Lord says, all the Vedas are searching after me. Lord Sri Chaitanya says that in the Vedas, the subject matter are only three, namely to establish the relation of the living entities with the personality of Godhead, perform the relative duties in devotional service, and thus achieve the ultimate goal, back to Godhead. As such, Vedantavadis or the followers of the Vedanta indicate the pure devotees of the personality of Godhead. Such Vedantavadis or the Bhakti Vedantas are impartial in distributing the transcendental knowledge of devotional service. To them, no one is enemy or friend, no one is educated or uneducated, no one is especially favorable and no one is unfavorable. The Bhakti Vedantas
See that the people in general are wasting time in false sensuous things. Their business is to get the ignorant mass of people to re-establish the lost relationship with the personality of Godhead. By such endeavor, even the most forgotten soul is roused up to the sense of spiritual life, and thus being initiated by the Bhakti Vedantas, the people in general gradually progress on the path of transcendental realization. So the Vedantavadis initiated the boy even before he became self-controlled and was detached from childish sportings, etc. But before the initiation, he, the boy, became more and more advanced in discipline, which is very essential for one who wishes to make progress in the line, in the system of Varnashram Dharma, which is the beginning of actual human life. Small boys after 5 years of age are sent to become brahmacharis at the Guru's ashram, where these things are systematically taught to every boy, be he a king's son or the son of an ordinary citizen. The training was compulsory, and not only to create good citizens of the state, but also to prepare the boy's future life for spiritual realization. The irresponsible life of sense enjoyment was unknown to the children of the followers of Varnashram system. A boy was even injected with spiritual acumen before being placed by the father in the womb of the mother. Before the father and the mother were responsible for the boy's success in being Both the father and the mother were responsible for the boy's success in being liberated from the material bondage. That is the process of successful family planning. It is to beget children for complete perfection, without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient. No one can become successful in following the instructions of the spiritual master, and without doing so, no one is able to go back to Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. So, so this story is like that कि जो है नारद मुनि की जो मदर है वो मेड सर्वेंट होती है, और 4 जो चतुर्मस्य होते हैं उसमें जो है जनरली साधु लोग ट्रेवल नहीं करते बिकॉज ऑफ रेनी सीजन एंड डिफरेंट कंडीशंस की वजह से वो एक ही जगह पे रहते हैं उन 4 महीनों में, और उनको जो उनकी मदर है उनको चांस मिलता है उनको सर्व करने के लिए। तो जब वो सर्व करती हैं तो साथ में जैसे नारद मुनि अपना नेचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज ही वाज नॉट स्पोर्टी, ही वाज नॉट डोंट टॉक मच, बल्कि बिल्कुल लिमिटेड बात करते थे। तो ही आल्सो सर्व विद हिज मदर, एंड उसमें क्या हुआ था कि मे बी आई डोंट रिमेम्बर, बट in the coming shlokas the Narad Muni will explain, he get a chance to take an uchisht of those sadhus. उन्होंने उनकी परमिशन लिया और वो उचिष्ट लिया, जिसकी वजह से जो है उनके अंदर जो है हृदय में भगवान के लिए प्रेम और जागृत हुआ। So, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जो है पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सारे वेदास हैं एक्चुअली उसका पर्पस क्या है, 3 पर्पसेस है जिसके हम बोलते हैं अभिधेय संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, कि किस तरीके से हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, फिर किस तरीके से हम उसको संबंध जो हमने पता चल गया कि हमारा भगवान के साथ संबंध कैसे है, तो हम उनके साथ किस तरीके से हम रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं थ्रू अ डिवोशनल सर्विस, और हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, टू गेट द प्रेम ऑफ लॉर्ड ना, लव ऑफ द गॉड, दैट इज द अल्टीमेट गोल। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो 3 अल्टीमेट पर्पसेस है वेदास, और यही एक्चुअली सारे स्क्रिप्चर्स के जो पर्पस है, दैट इज हाउ वी कैन स्टार्ट लविंग ऑन अ गॉड। क्योंकि अभी क्या है, हमारा जो लव है दैट इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट एक्चुअली हमारा लव क्या है, स्क्रिप्चर्स में लव एक्चुअली इज ओनली फॉर कृष्णा, बट हम उस लव को जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ढूंढ रहे हैं। So with the help of Vedas, with the help of these 3 steps, we can re-establish a love with the Krishna. फिर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो है एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है ना, कि जो पहले टाइम में क्या होता था कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, दे आर सपोज टू गो टू गुरु आश्रम, और वहां पर वो ब्रह्मचारी आश्रम को फॉलो करते थे, एंड दे आर ट्रेन टू टेक अप द डिफरेंट आश्रम फॉलो। और फिर प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि जो ये आश्रम का प्रोसेस है उसमें स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट संस्कार, है ना, विद 7 संस्कार, उसमें फर्स्ट संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार। तो वहीं से जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है टू beget a child so that they can train for the transcendental for a self realization। इवन श्रीमद् भागवतम में एक जगह वर्णन आता है कि
गुरु को और पिता को और माता को जो है, गुरु को शिष्य और पिता और माता को बच्चों को एक्सेप्ट बच्चे तभी होने चाहिए देन इफ they are able to give them the self realization। उसको अगर वो नहीं कर पा रहे हैं then they are not in position to become a guru, father or a mother। So that is the understanding of this shloka, so we can end the session here। Anybody have any question or a comment? Hare Krishna. Hare Krishna। Hare Krishna. Mataji, इसमें in the first shloka there was a term na Vishnu Maya. Does it mean three modes of material nature? मतलब Vishnu Maya, normally तो we hear Maya, but what is Vishnu Maya? Is it different? Vishnu Maya is Maya only। मतलब Maya is She is also she's Krishna's energy only, that's why Vishnu। आप म्यूट पे हैं प्रभु जी, अशोक प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण माताजी, सॉरी। हाँ माताजी, एक और दूसरे श्लोक में यू सेड ना कि जीवास आर मार्जिनल एनर्जी, दे कैन बी दिस साइड और दैट साइड। जी प्रभु जी। बट मैं जस्ट वैसे मैं अपना एग्जांपल जैसे देख रहा हूँ कि मैं अभी तो क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास मतलब क्या है, मतलब एम आई अंडर द स्पिरिचुअल एनर्जी और कैसे, मतलब बिकॉज आफ्टर द क्लास नाउ आई विल इंडल्ज इन सम अदर एक्टिविटीज विच आर नॉन स्पिरिचुअल। तो बट आपने कहा था कि यस तो प्रभु, हमारा नेचर ही ऐसा कि वी अभी जो है हमारा वी आर नॉट फिक्स्ड, दैट्स व्हाई वी आर असाधकास है ना, वी आर नॉट फिक्स्ड बिकॉज़ आवर consciousness is flickering। Sometimes we are in Maya, Prabhupada says we are always in Maya basically, but by the mercy of Srila Prabhupada, when we are reading, when we go to temple, when we do a devotional service, yes, we are trying ourselves to elevate our consciousness, na? And by the mercy we'll get to that position, and every time we are just keep on thinking about the Krishna। the switching is मतलब okay, मतलब Yes, अभी Prabhu, that's what we are sadhakas, we are training ourselves, that's not coming naturally to us है ना। हमें अगर मैं अपनी बात करूँ, I have to struggle to wake up in early morning, but जैसे हम देखते हैं बाकी जो senior devotees है, they for them वो रात को कितने बजे भी सोए, they naturally get up at the same time। ये तो हम materialistic life में भी देखते हैं। Even I have seen my father कि उनको हैबिट थी 4 o'clock उठने की, तो वो चाहे रात को कितने बजे भी सोए, वो ऑटोमेटिकली 4 o'clock उठ जाते, because that is become his nature, na? So that's what we are trying to, because that is nature to love a God, but we have forgotten that by doing a sadhana, by the especially with the help of mercy, जो है हम लोग जो है we get to that position that we get the natural love which is there in our heart, it will develop, it will reveal basically in our heart, it is covered now। thank you। So that's why we're trying to be always in association, trying to read the Srimad Bhagavatam, and try to be जो भी प्रभुपाद ने पूरा एक्टिविटी पूरा schedule दिया हुआ है, we're trying to follow that। yes ma'am, thank you so much। Thank you so much। और प्रभुपाद made 365 festivals, क्या सॉरी क्या कह रहे हैं? 365 days festivals also। yes ma'am। I'm more conscious about the short, yes ma'am। because he knows that our nature is very flickering। yes माता जी, क्योंकि अभी तो क्लास थी, आई वाज फर्स्ट, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ ये नहीं बोलिए, सब मेरी भी यही स्थिति है। तो बट एनीवे थैंक यू माता जी। Thank you sir। हरे कृष्ण। We can end the session। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण भगवान श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे वेद विशेष शरणवादी पाश्चात्य श्रील प्रपात श्रीमद् भागवतम। Sorry, Roy Prabhu, I think he was saying something। You are on mute, Prabhuji। Hare Krishna. Can you हरे hear? कृष्ण माता जी। ओके, Yes, असीम प्रभु, मैं तो कह रहा था आप तो ज्यादातर देवी प्रकृति के आश्रित में ही रहते हैं प्रभु जी। और स्ट्रगल तो हमको करना पड़ता है। दिस इज योर हम्बलनेस दैट यू आर सेइंग दैट यू हैव टू स्विच, बट यू आर नॉट स्विचिंग, यू आर मेजरली, यू आर सो हम्बल दैट यू आर सेइंग दैट, बट यू आर मेजरली इन द मोड ऑफ इन टेकिंग शेल्टर ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी ओनली। वी हैव every shining thing is not a क्या कहते हैं ग्लिटर कहते हैं ना। प्रभुजी आपकी हम्बलनेस है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं। हम मेरी स्थिति ऐसी, मैं तो कहती भी नहीं हूँ। नहीं माता जी, मुझे मालूम है ना माता जी, मतलब बस एनीवे, बट नो कमेंट्स, थैंक यू।
नहीं प्रभु जी। प्रभु जी एक लेक्चर में मैंने सुना था रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि एक्चुअली हम अपनी साधना भक्ति से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, बट वी आर स्टिल डूइंग अ साधना भक्ति टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ आचार्य, अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द कृष्ण. यस माता जी। So it's little bit sincerity, what you are the most sincere, so definitely attracting the mercy of the नहीं माता Lord and the Acharya. So एनी माता जी, नो कमेंट्स, मुझे मालूम है कि कहाँ पे एनीवे And we will try to follow you, प्रभु जी। कुछ नहीं है आप, एनीवे थैंक यू thank you so much for this. हरे Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा रमेश्वर प्रभु।